Hello students, welcome back to the channel. Today we will do examples of Norrish type 1 reaction. I hope you will be clear type 1 reaction कहाँ लगेगा और type 2 reaction कहाँ लगेगा. अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे type 1 की, फिर mixed example, ओके, जहाँ पे type 2 अप्लाई होगा या 1 अप्लाई होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगी, and then finally we will do type 2 reaction. So let's start. So in a very first example, we have a carbonyl attached with carbon which contain 3 methyl groups. So when you fall light, it will goes to S1, then ISC, T1. After T1, it undergo alpha cleavage. What is alpha? 0 alpha alpha. Okay, sorry, alpha. So दोनों ही अल्फा हैं. कौन सा अल्फा जाएगा? ओके, विच फॉर्म स्टेबल रेडिकल. सो रेडिकल स्टेबिलिटी को आपने सबसे पहले रखना है. ओके, कौन सा अल्फा जाएगा? विच फॉर्म स्टेबल रेडिकल. सो यहां पे दोनों ही सिमेट्रिकल हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. कौन सा अल्फा जाएगा? Sorry, let's write it in a short form. Methyl, methyl, methyl radical plus carbon, methyl, methyl, methyl radical. Okay, again we know this. What happened? Minus CO. Okay, so यहाँ पे क्या आ गया? Methyl, methyl, methyl radical plus carbon, methyl, methyl, methyl radical. So both the diradical join together. Methyl, 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 methyl. So what you can easily understand what happened. T1 alpha cleavage, alpha cleavage होने के बाद माइनस सी होने के बाद जो भी डायरेडिकल बनेगा वो ज्वाइन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो दो फ्रेगमेंट्स थी वो काफी स्टेबल थी. ओके, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. ओके, नाउ वी विल डू वन मोर एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 2. वी हैव अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन 1 and 2. ओके, सो हियर आई हैव ओनली one CH3 group. Okay, so अब ध्यान से देखिए what will happen. I have 2 alpha, clear, but this alpha form stable radical as compared to this alpha. So I will break radical plus C double bond O CH3. Clear? Now what happened? अब यहां से माइनस CO करा सकते हो, बट अगेन क्या जनरेट होगा? मिथाइल रेडिकल. ओके, विच वाज इट्स ओके, इट इज स्टेबल बट नॉट दैट मच. तो एक चीज आप और कर सकते हैं यहां पे, वो कर सकते हैं CH2 हाइड्रोजन. तो ये जाएगा डिस्प्रोपोर्शन. This methyl goes there. As a result, we have CH2 double bond C, CH3, CH3 plus CH3, C double bond O, H. So this is aldehyde and this is your alkene. So this is the stable product formed by this reaction. Okay, now we will do our reaction number 3. If you have any question, any query, you can ask me in the comment box. Okay, I will explain it in my next video or I will prepare a special video for it. Okay, but the concept is very simple. Okay, दोनों साइड है, दोनों साइड आप बना के देख सकते हैं, but this radical is more stable. Okay, that's why we will form it from this side. Okay, now question number 3. In question number 3,
I have a cyclohexanone, right? If you have doubt, form both the products. If it is not a competitive exam, if it is a competitive exam, then you should be accurate. Okay? S1, ISC, T1. So it is symmetrical. It is symmetrical. जीरो, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इस तरफ से देखिए, चाहे आप इस तरफ से देखिए. So what will happen? It will undergo alpha cleavage. Okay, homolytic cleavage हो जाएगी. And then first option, okay, ऐसे नहीं, इसे बना लेते हैं. Case 1, what will happen? Minus CO. Okay, we have radical. So these two radicals join together and you will get a 5-member ring. Okay, one thing more, you know that 5-member ring is comparatively more stable as compared to 6-member ring because 5-member ring is less strained. Next, क्या हो सकता है? Case 2, disproportion. Disproportion action. So where is disproportion? From there. Okay, so this hydrogen goes to keto group and form a aldehyde. Okay, and here this will form a alkene. So this will show a disproportion reaction where one alkene and other aldehyde will form. Clear? So next is my third example. Even in my third example, it is substituted. Similarly, this one is substituted, no problem. So same, only I have introduced two additional methyl groups. Okay, so here as well, sorry, not here, here. Okay, but although this will remain as the major product in previous as well as in this reaction. Clear? Now move on to our example number 5. In example 5, again it is a 7-member ring. It is a 7-member ring. So light S1, ISC, T1, and then it will definitely undergo a homolytic cleavage because this is 0, ये भी alpha है, and this is also alpha, and both are same. You can break it from any side. So I have this one. So you can produce n number of products. फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास एक या दो प्रोडक्ट नहीं बनते हैं. फोटोकेमिस्ट्री में हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं. दैट्स व्हाई फोटोकेमिस्ट्री को लोग कम स्टडी करते हैं. क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसमें से सिंगल प्रोडक्ट को निकालना, प्यूरिफिकेशन करना, तो वही बता सकता है जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करी है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी. क्लियर? सो कॉलम कर करके ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं, सिंगल सिंगल कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं. या आजकल बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई है हमारे पास, HPLC, जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, सिंगल कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं. बट दैट HPLC इज वेरी कॉस्टली एंड योर what do you call this, column is very time consuming. Okay, it needs patience. So what will happen? It undergo minus CO. After minus CO, the diradical join and you guys end up with a 6-membered ring which is very much stable
as compared to the 7-membered ring. Okay. One more you can do, that is disproportion. We have already studied about the disproportion. Okay, so क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन, this hydrogen form alkene. Hydrogen and it form alkene. So this will be the product formed, and it forms 6-membered ring, or it may happen that this will break. This is okay. Okay, but there is a problem if I give you this reaction in any protic solvent like water, like methanol, like ethanol. So important, if a protic solvent is given in this type of reaction, Norrish type reactions, then it always form ketene. Okay, ketene कैसे बनता है, that I forget to tell you. Okay, तो ketene बनेगा यहां से. So ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, and this hydrogen goes there. Okay, so as a result, double bond O formed. Okay, then if you have water, so water will attack at this position, it will go there. So you can write in a simple way COOH. Okay, so you end up with the acid. So ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है या अप्रियोटिक सॉल्वेंट दिया है. अगर तो आपको अप्रियोटिक सॉल्वेंट दिया है then disproportion reaction minus CO करके ring closure, it's very common. But अगर आपको प्रियोटिक सॉल्वेंट दिया है तो always form a ketene. Ketene क्या होता है, C double bond O. This is called ketene. तो ketene में whenever you add water, so it will form HCOOH. Okay, so this is my example number 5. Next, the last example. Okay, let's discuss the last example. In the last example, all right, light S1, ISC, T1, and then alpha cleavage takes place. So alpha cleavage takes place from this side. Radical, double bond O, radical. Okay. Now minus CO, radical, radical, not there. You can join them. Two 5-member rings fused together, and this will be the major product of the reaction. So I hope you like the video. I'll see you in next video.